Good morning, sir. Good morning. Okay, beta, the recording of the meeting is now on, so we can continue with our topic. So yesterday we had done spherical trigonometry. We started off with the basics. We did the basics of spherical trigonometry. We discussed about a great circle. Then we discussed about a small circle. Then I told you about spherical triangle. And then we went on to some formulas. We did cosine formula, and then we went on to Napier's rule. So beta, can anybody tell me what is a great circle? Any one of you? Circle on the surface of sphere. Celestial sphere whose center passes, which passes through the Center center of passing the to center of earth. Sphere. Okay, very good, Abhay and Mohammed. A slight correction, beta. One, not necessarily celestial sphere. It can be on any sphere, beta. A circle on the surface of any sphere. Okay, so that's number one. Anything more about that circle, beta? The plane of which passes through the center of the sphere. Very good, Kirat. So the plane of which passes through the center of the sphere. Or you can define it in a second method also, a second way also. Anybody remembers? The second one was a circle on the surface of a sphere whose center matches with the center of the sphere. So सर्कल का और स्फीयर का अगर एक ही सेंटर है तो वो ग्रेट सर्कल होगा, एंड सर्कल का और स्फीयर का सेंटर अगर अलग अलग है तो वो एक स्मॉल सर्कल होगा. So can anyone give me an example of a great circle on the surface of Earth? Equator, sir. Okay, very good, Kirat. Anyone Meridian. can give, very good, Upinder. Meridian. And can you give me an example of a small circle on the surface of Earth? The parallel of latitude. Parallel of latitude. Very good, beta. So all the parallel of latitude except the equator are small circles. Equator is the only parallel of latitude which is a great circle. So these were. Sir, meridian is a great circle or meridian is a semi-great circle? See, that's right, beta. One meridian, if you see, let us say if you take Greenwich meridian, it is 50% of the great circle. Another 50% is 180 degree meridian. Anti-meridian. Yes, sir. So if you join both of them, then Then it's a join great both circle. of them, the complete circle is a full great circle. Yes, sir. Okay. Okay. So can anyone tell me about a spherical triangle, beta? What is a spherical triangle? It is a triangle which consists with the sides, which is the part of great circle. Okay, very good, Upinder. It On is the a surface of triangle. sphere. That's right, Abhay. It is a triangle on the surface of sphere, all three sides of which are parts of great circle. तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक साइड स्मॉल सर्कल हो जाती है, any one of the side becomes a small circle, it is no more a spherical triangle then. For being a spherical triangle, it should have all the three sides as parts of great circle. और spherical triangle हमारे लिए important है. Important क्यों है? क्योंकि जो फॉर्मूला हम आगे देख रहे हैं, cosine formula yesterday we saw, and after that Napier's rule, we were into Napier's rule. So ये जो सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, इन्हें हम सिर्फ स्फेरिकल ट्रायंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं. अगर स्फेरिकल ट्रायंगल ना हो, मतलब
अगर तीनों साइड्स में से कोई भी साइड ग्रेट सर्कल ना हो, स्मॉल सर्कल बन जाए, तो वो ट्रायंगल स्फेरिकल ट्रायंगल नहीं रहेगी. इन दैट केस these formulas cannot be applied. Okay. So anyone remember the cosine formula, beta? Sir, cos theta is equal to cos of opposite side minus cos adjacent side into cos adjacent side 2 upon sine of adjacent side 1 into sine of adjacent side 2. Very good, Abhishek. Very good. So cos of any angle in a spherical triangle is equal to cos of opposite side minus cos of adjacent side 1 multiplied by cos of adjacent side 2 whole divided by sine of adjacent side 1 multiplied by sine of adjacent side 2. So that was the cosine formula. Okay. Now, beta, I told you two conditions in which cosine formula can be used. So can anyone tell me? Do you remember? What were those two conditions in which we can use cosine formula? All three sides should be know known, the adjacent size and the angle. and two sides and an enclosed angle should be known. Very good, Abhishek and Alok. Very good. So there are two conditions in which cosine formula can be applied. One is when we know all the three sides of the spherical triangle, we can apply the cosine formula and we can find out or obtain any one of the angles of this triangle. Second condition is that if you have any two sides of this triangle and the included angle. Now, what is important here is the angle which is known to us should be the included angle. So included angle means whichever two sides you know, the angle which is made between these two sides, that is the angle which we should know to apply the cosine formula. So if we do not know the included angle, we know some other angle, then in that case, cosine formula will not be applicable. So what will be applicable then? That we will see later. In our great circle sailing problems, never you will face a situation where you will have two sides and some other angle, not the included angle. So always in all the questions, we will be having the included angle available to us. Okay, so this was the cosine formula. So इसके बाद बेटा हमने Napier rule कल शुरू किया था. We went a little bit into it. So today I'm going to repeat the Napier's rule right from the beginning. So ये दोबारा से हम इसको आज reconfirm कर लेंगे. So before I open up the presentation and we proceed ahead, any doubt coming in anybody's mind till what we have done up to now? No, sir. Okay, very good, beta. Okay, so shall we open up the presentation and proceed on to Napier's rule? Yes, sir. Okay, so just give me 1 minute. We will open up the presentation. Now, Napier rule is applicable to special spherical triangle.
Okay, beta, can you see the screen and hear the voice? Okay. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. All right. What should be the speciality? The speciality in these triangles is 90 degrees. That means either any one angle or any one side of the triangle should be 90 degrees for us to apply the Napier's rule. So if you see a spherical triangle in which at least any one side or any one angle is 90 degrees, Napier rule can be applied there. Now, what does Napier rule say? Napier rule tells us that in any special spherical triangle, means having a 90-degree part, that is the speciality. If you know any two things other than the 90-degree part, 90 डिग्री वाले पार्ट को छोड़ के अगर आपको उस ट्रायंगल में कोई भी और दो चीजें पता है, it could be two sides, it could be two angles, it could be one side and one angle, कुछ भी हो सकता है ये. So any two sides of the triangle, if they are known to you, or any two parts of the triangle, if they are known to you, by using the Napier's rule, you can find everything else in that triangle. So if we apply the Napier's rule, it makes solving the spherical triangle very, very easy. Other than the 90-degree part, you need to know any two parts of the triangle and the entire triangle can be solved. Now, how do we apply this? So for applying this, we have to make a diagram. So what you do is you draw a circle, like I have drawn this blue color circle here. We have this PZX triangle, which is a special spherical triangle. You can see here that this angle Z is 90-degree angle. So it's a special spherical triangle. So when we apply the Napier's rule, we make this circular diagram. And in this circular diagram, we divide this diagram into 5 parts. Okay, so you can see these are the 5 parts in which we divide it. Now what we do is, whatever is the 90-degree part of the triangle, that is written on top here. So in this case, angle Z. Angle Z is the 90-degree part. So I write this angle Z on top. Now from this angle Z, you start to move clockwise or anti-clockwise in whichever direction you want to go. If you want, you can move clockwise. If you want, you can move anti-clockwise also. Okay. And whatever parts of the triangle they keep on coming, you keep on filling them up in this circular diagram. So from Z, we move. We are moving anti-clockwise in the triangle. So next part which comes is small x, which is side x. So you see side x is built here in this part. Then you have angle P. You see angle P is built in this part. Now in the bottom 3 parts, that is this one, and this one, you see we write 90 minus, 90 minus, 90 minus. And whatever part is filled up, it comes after this value. After 90 minus synonym, we put the part of the triangle after this. So in number 3 part here, you see it is 90 minus P. Can you go further? The next part of the triangle which comes in is small z or side z. So you see in part number 4, it is 90 minus small z. And the next part is capital X or angle X. So you see in number 5, it is 90 minus capital X. And the next part is side P.
So you see we have side P here, and once the triangle is completed, the circular diagram, all parts are also filled up. So this is how we fill up the parts. Now, as I told you, you can go clockwise, you can go anti-clockwise. If you want, you can go clockwise in one part and anti-clockwise in the other part. Like in the triangle, if you want to go anti-clockwise, it is perfectly fine. In the circle, if you want to go clockwise, it is perfectly okay. So whichever direction you move, whether you move clockwise or you move anti-clockwise, both ways, the Napier rule application is going to be correct. So bottom line is that whichever way you apply this Napier's rule, you need to be really intelligent to make this wrong. So whichever combination you select, the filling up of the diagram, filling up of the circular diagram is going to be correct always. So once this diagram is filled up, after this we apply the Napier's formula. What is the Napier formula? There are two formulas which we apply. The first one is sine of the middle part is equal to tangent of adjacent part 1 multiplied by tangent of adjacent part 2. The second one is sine of the middle part is equal to cos of opposite part 1 multiplied by cos of opposite part 2. So what do we understand by these middle part and adjacent part? Let's understand. Now, beta, as I told you, Napier rule can be used if you know any two parts of this special spherical triangle other than the 90-degree part. So in this triangle PZX, you can pick up any two parts which are known to you. Okay, beta. So let's pick up angle P and angle X. These two parts are known to us in this triangle. And let's say we want to find out side Z. So side Z is what we want to find out. Find out करना है उसे रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है, and जो हमें पता है उनको ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया है. Now let's identify these parts in this circular diagram. What we want to find out is small z, and we can see this small z is here in this part. So let me mark this part as red. This is the part which we want to find out. And the parts which are known to us, one part which is known to us is angle P. So you can see here, this is where angle P is. And the next part which is known to us is angle X. This is where angle X is. So in the circular diagram, now the three parts are highlighted. One part which we want to find out is in red. The two parts which we already know are in green. अब बेटा इन तीनों में से हमें एक पार्ट को अपना मिडल पार्ट बनाना है, लेकिन मिडल पार्ट कैसे बनाना है? बाकी के जो दोनों पार्ट हैं वो या तो उसके एडजेसेंट हो जाएं या दोनों के दोनों उसके ऑपोजिट हो जाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट एडजेसेंट हो गया और दूसरा पार्ट ऑपोजिट हो गया. दिस शुड नॉट हैपन. आइदर बोथ शुड बी एडजेसेंट और बोथ शुड बी ऑपोजिट. अब एडजेसेंट और ऑपोजिट का क्या मतलब है? कोई भी पार्ट अगर आप पिक करते हो, लेट अस से आई पिक अप दिस पार्ट नंबर 3. Now two parts are sharing their boundary with this part. Number 2 part and number 4 part, ये दोनों number 3 के साथ अपनी sides touch कर रहे हैं. So they are known as adjacent parts. दो पार्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं और इसके साथ नंबर 3 के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करते. दैट्स नंबर 1 एंड नंबर 5. नंबर 1 एंड नंबर 5 3 के साथ बिल्कुल टच नहीं हो रहे हैं. सो दे आर नोन एज ऑपोजिट पार्ट्स. तो हमें अब इन तीनों में से एक पार्ट को अपना मिडल पार्ट बनाना है, सो दैट बाकी के दोनों पार्ट या तो दोनों के दोनों एडजेसेंट बन जाएं
या दोनों के दोनों जो हैं ये ऑपोजिट पार्ट बन जाए। तो विच पार्ट शुड आई पिक अप एज माय मिडिल पार्ट? Number 4. 4 1. Very good. Number 4 has to be my middle part. Because अगर मैं नंबर 4 को मिडिल पार्ट लेता हूँ तो 3 and 5 ये दोनों के दोनों इसके एडजेसेंट पार्ट बन जाते हैं। अगर मैं 3 या 5 में से किसी को अपना मिडिल पार्ट लेता हूँ, लेट अस से इफ आई ट्राई टू मेक नंबर 3 एज माय मिडिल पार्ट, तो नंबर 4 तो एडजेसेंट हो जाएगा, नंबर 5 ऑपोजिट हो जाएगा। तो हमारे फॉर्मूला में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें एक एडजेसेंट हो और दूसरा ऑपोजिट हो। Either both should be adjacent or both should be opposite. So number 3 cannot be taken as a middle part. Similarly, number 5 cannot be taken as a middle part. So we take number 4 as our middle part and बाकी के दोनों हैं adjacent. So we will use the adjacent formula here. It says sine of middle part, that means sine of 90 minus small z is equal to tangent adjacent part 1. One part is 90 minus x and the second part, adjacent part, is 90 minus p. So you see, if we know angle x and we know angle p, the right side of this formula is known to us. If we put these values here and put them in our calculator, we will be able to easily find out the middle part, which is 90 minus small z. And z part जो है, ये side z जो है, small z, ये हमारे पास आ जाएगा. So that's how we apply the Napier's rule. So अब बेटा इस एप्लीकेशन में कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, you can share with me. Okay, so all clear up to here, beta? सर एक एग्जाम्पलरी एक न्यूमेरिकल कराओगे इसका? ओके बेटा करेंगे, अभी करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। So you just understand the concept of the formula first. अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। So when we do the numericals तो इसकी एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगी। ओके ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड देन। ये मैंने आपको एक एप्लीकेशन नेपियर रूल की बताई है, दैट इज फॉर ए राइट एंगल्ड स्फेरिकल ट्रायंगल। So let's also see how do we apply the Napier rule in a right-sided spherical triangle. So let's continue. सर ये जो आपने इसमें डायग्राम बनाई है, राइट सर इसमें जैसे आपने अभी नंबरिंग करके रखी 1 2 3 4 5, सर अगर नंबरिंग हटा दे तो फिर ठीक है सर, लेकिन ये जो नंबरिंग 1 आपने पी लिखा है तो वहां पर तो एक्स आना चाहिए ना सर वैसे? नहीं बेटा, ये नंबरिंग को हटा दो, यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस नंबरिंग। जैसे वही कंफ्यूजन हो रही थी नंबरिंग की वजह से। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस नंबरिंग, नॉट रिक्वायर्ड। तो मतलब अगर सर अगर जैसे हम आपने जैसे पी लिखा है वहां पर एक्स लिख दे तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चल के तो फिर पी वैसे आ जाएगा, फिर ठीक है सर? या यू कैन डू दैट बेटा। You want to move clockwise here or anti-clockwise here, perfectly okay. You want to move clockwise in the triangle or anti-clockwise in the triangle, perfectly okay. You want to move clockwise here and anti-clockwise here, even that is okay. Okay. Sir, one more question, sir. बोलो बेटा। सर फॉर एग्जांपल यू टोल्ड अस कि एक या तो दोनों ऑपोजिट होनी चाहिए या दोनों एडजेसेंट होनी चाहिए। सपोज वन इज ऑपोजिट, वन इज एडजेसेंट, तो व्हाट कैन वी डू इन दैट केस सर? बेटा तुम मुझे 3 पार्ट पहले तो बताओ, 2 नोन है और एक अननोन है, कोई भी 3 पार्ट बता दो, फिर उसको डिस्कस करते हैं। सर फॉर एग्जांपल एंगल पी एंड स्मॉल जेड।
Okay. Angle P and small z are known to you? And we have to find capital P. Okay, we have to find capital P. तो सर Okay. इसमें साइन नेट पार्ट Find capital P. Okay, all right. And the known part is, one is small z. Which is the other one, beta? Small P, sir. Small p. This is known to us. Let me mark it in Yes. green. Okay, ये आ गया बेटा. So अब इन parts को हम ये right side वाली diagram में identify करते हैं. Small p is here. This is known to us. Small z is here. This is again known to us. Okay, and capital P जो है ये यहाँ पे है. Oh, let's pick up red. This is where capital P is. Okay. अब मैंने आपको ये बताया कि इन तीनों में से हमने एक पार्ट को मिडल पार्ट बनाना है ताकि बाकी के दोनों या तो उसके एडजेसेंट आ जाएं या उसके ऑपोजिट आ जाएं. अब अगर मैं 90 माइनस पी को मिडल पार्ट बनाता हूं तो गड़बड़ हो रही है. गड़बड़ ये हो रही है कि जो 90 माइनस स्मॉल जेड है ये तो एडजेसेंट आ गया, और जो स्मॉल पी है ये इसके ऑपोजिट चला गया, तो इसको मिडल पार्ट नहीं बना सकते. ओके, व्हाट इफ यू मेक स्मॉल पी एज योर मिडल पार्ट? Yes, sir. Then we can use the second formula. Right. So if you make small p as your middle part, तो बाकी के दोनों opposite बन गए and this formula can be used. Okay. जरूरी नहीं है कि unknown part middle part ही होना चाहिए. Middle part can be any of the parts. Yes, sir. Got it. Okay. अब बेटा इसे याद रखने का भी बड़ा आसान तरीका है. You see, लेफ्ट साइड में जो फॉर्मूला है उसमें तो हमेशा मिडिल पार्ट ही आता है. राइट साइड में टेंजेंट एंड एडजेसेंट दे ऑलवेज गो टुगेदर. यू सी दीज आर राइमिंग वर्ड्स. टेंजेंट एडजेसेंट दे ऑलवेज गो टुगेदर, एंड कॉस एंड ऑपोजिट दे गो टुगेदर. दोनों में ओ की साउंड है. कॉस एंड ऑपोजिट दोनों में ओ की साउंड है. बोथ ऑफ देम गो टुगेदर. Tangent and adjacent both are rhyming words. They always go together. So this is how you can memorize these formulas easily. Thank you, sir. Okay. और बेटा इसमें कोई और? सर ये तो अभी हमने उसका देख लिया कि z एंगल 90 है. अगर हमारी pz साइड 90 है. Very good. Let's go to side 90 now. This was right angled spherical triangle. Let's move on to right-sided spherical triangle. Right-sided spherical triangle को हम लोग बेटा quadrantal spherical triangle भी बोलते हैं. Okay, this is also known as quadrantal spherical triangle. And if you see here in this, we have the side P, small p, which is 90 degrees. So we have a quadrantal triangle here. How do we apply the Napier's rule here? इसमें नेपियर रूल बिल्कुल सेम वे में अप्लाई होता है, अदर देन वन स्मॉल डिफरेंस. जब ये राइट साइड वाली सर्कुलर डायग्राम आप बनाते हो तो इसमें जो ये बॉटम वाला पार्ट है, दिस पार्ट, हमने बॉटम वाले तीनों पार्ट में 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस लिखा था. ठीक, इन तीन पार्ट्स में 90 माइनस पार्ट हमने यहाँ पे लिखा था. बट in case of a right-sided triangle, जो हमारा सबसे बॉटम वाला पार्ट है, दिस पार्ट, इसमें हम 90 को पीछे ले जाते हैं, आगे नहीं लगाते. You see, 90 has been taken in the end. 90 पीछे चला गया है. जो ट्रायंगल का पार्ट है वो आगे आ गया है. Okay, this is the only difference. Rest entire application is exactly same. So आपने 90 माइनस पी की जगह इसको p माइनस 90 कर देना है, ये जो नीचे वाला पार्ट है. अदरवाइज बाकी सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है. सर्कुलर डायग्राम भी बिल्कुल वैसे ही बनती है, जो फॉर्मूले लगते हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं, एग्जैक्टली सेम. और
इसमें भी 90 डिग्री वाले पार्ट को छोड़ के कोई भी और दो पार्ट अगर हमें पता हो तो हम कुछ भी और इस डायग्राम में ढूंढ सकते हैं. That is the application of Napier's rule on a quadrantal or right-sided spherical triangle. ओके, सो बेटा अब कोई डाउट अगर आपको आ रहा है इनमें, यू कैन शेयर विद मी. दोनों क्लियर हो गए बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल और राइट साइडेड ट्रायंगल. क्लियर है सर. ओके, ऑल राइट. सर ये राइट साइडेड एक बार और एक्सप्लेन करते थे. ओके, ठीक है बेटा, मैं व्हाइट बोर्ड पे एक नई ट्रायंगल बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. ओके, सो लेट्स मेक ए राइट साइडेड ट्रायंगल. मैंने ये एक स्फेरिकल ट्रायंगल यहाँ पे बना दी. लेट्स अज्यूम कि इसमें जो ये वाली हमारी साइड है ये राइट साइड है. अब जो राइट साइडेड ट्रायंगल होती है बेटा, उसको एक ऐसा बॉक्स बना के हम लोग शो करते हैं. So if you anywhere see that this kind of box is made on the triangle, then please understand that this is a 90-degree side. So let's give it a name. Let's call it ABC triangle. अब हमने बेटा इसमें नेपियर रूल लगाना है. मैंने आपको ये बताया है कि 90 डिग्री वाले पार्ट को छोड़ के कोई भी और दो चीजें अगर हमें पता हो इस ट्रायंगल में, तो हम नेपियर रूल लगा के किसी भी और एंगल या साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं. बाकी की सारी चीजें इस ट्रायंगल में फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अब आप मुझे कोई भी दो चीजें इस ट्रायंगल में बता दो जो आपको पता है. वी विल मार्क दैट विद ग्रीन कलर. Any two things you can. Angle A and the side AB. वेरी गुड. सो बेटा एंगल ए को मैंने ग्रीन कलर में मार्क कर दिया एंड साइड ए बी को मैंने ग्रीन कलर का टिक मार्क कर दिया. ये दोनों हमें पता है. सो अब हम ट्रायंगल में कुछ भी और नेपियर रूल की हेल्प से ढूंढ सकते हैं. सो कैसे ढूंढना है हमें? लेट्स अप्लाई द नेपियर रूल. सो हमने ये सर्कुलर डायग्राम यहाँ पे बना दी. सर्कुलर डायग्राम में हमने 5 पार्ट बनाने हैं. सो ये हमने सर्कुलर डायग्राम में 5 पार्ट बना दिए. अब बेटा यहाँ पे हमने नीचे वाले पार्ट्स में लिखना होता है 90 माइनस. ये बॉटम पार्ट में क्या आएगा बेटा? कैन एनीवन टेल नाउ? P minus 90. वेरी गुड. पार्ट माइनस 90. ओके, सो मैंने -90 यहाँ पे लिख दिया और पार्ट को हम अभी फिलअप करेंगे. सो अब बेटा इस ट्रायंगल में जो 90 डिग्री वाली पार्ट है विच इज साइड BC, इसको हमने यहाँ ऊपर लिख दिया. सो BC कम्स ऑन टॉप. अब बेटा आप बताओ कि ट्रायंगल में आपने क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. ओके, चलो एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ते हैं. सो वी गो एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस इन द ट्रायंगल. सर्कल में भी बता दो बेटा क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी जा सकते हो. क्लॉकवाइज सर. ओके, क्लॉकवाइज. सो BC साइड के बाद इफ यू गो एंटी क्लॉकवाइज, अगला पार्ट जो ट्रायंगल का आता है वो आता है एंगल C. सो हमने एंगल C को यहाँ पे फिलअप कर दिया. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज साइड AC. साइड AC को भी हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया. इसके बाद आता है एंगल A. सो एंगल A को मैंने फिलअप कर दिया. देखो बेटा मैंने एंगल A को आगे की तरफ लगाया है क्योंकि ये राइट साइडेड ट्रायंगल है. सो राइट साइडेड में सबसे बॉटम वाले पार्ट में ट्रायंगल का जो पार्ट है वो आगे आता है और 90 पीछे आता है. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. ए के बाद अगला पार्ट है साइड AB. सो वी फिल दिस अप.
हमने साइड ए बी को यहाँ पे फिलअप कर दिया। अगला पार्ट जो है वो है एंगल बी। सो एंगल बी कम्स हियर। हमारी जो सर्कुलर डायग्राम है ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। सो अब इस सर्कुलर डायग्राम में भी जो नोन पार्ट्स हैं उनको मार्क कर देते हैं। एक एंगल ए हमें पता है, सो दिस पार्ट इज नोन। दूसरा साइड ए बी हमें पता है, सो दिस पार्ट इज नोन। सो अब हम इस ट्राइंगल में कुछ भी और ढूंढ सकते हैं। सो बेटा सबसे पहली चीज आप क्या ढूंढना चाहते हो वो बताओ। सर कैपिटल सी और मे बी बी साइड बी सी। ओके ओके, सो यू वांट टू फाइंड आउट साइड बीसी। बेटा बीसी तो हमें पता है, बीसी तो 90 डिग्री है। एंगल सी सर, एंगल सी। ओके, सो लेट्स से एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। सो आई मार्क इट इन रेड। दिस इज द एंगल वी वांट टू फाइंड आउट। अब बेटा ट्राइंगल से सर्कुलर डायग्राम पे आते हैं। ये रहा एंगल सी। नाउ कैन यू टेल मी कि ये जो तीन पार्ट हैं, दो ग्रीन वाले और एक रेड कलर में एंगल सी मैंने बनाया, इनमें से मिडिल पार्ट किसे लेना चाहिए? एंगल ये सी और को। बाकी अपोजिट में एंगल सी, एंगल वेरी सी, गुड, एंगल सी। वेरी गुड। मिडिल पार्ट बनेगा एंगल सी और बाकी के दोनों बनेंगे ऑपोजिट। नाउ कैन यू टेल मी बेटा ऑपोजिट वाला फॉर्मूला क्या होता है? कॉस। वेरी गुड। सो लेफ्ट साइड में तो साइन आता है, सो साइन ऑफ द मिडिल पार्ट इट विल बी साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कॉस ऑपोजिट। सो कॉस ऑफ कोई भी एक पार्ट ले सकते हो आप, 90 माइनस ए बी, ए माइनस 90 कोई भी ले सकते हो। सो मैंने ये पहला पार्ट ले लिया 90 माइनस ए बी, पुट दिस इन ब्रैकेट, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑपोजिट 2। सो दूसरा जो ऑपोजिट वाला पार्ट है वो है a माइनस 90। सो ये हमारे नेपियर रूल के फॉर्मूला की एप्लीकेशन हो गई। अब बेटा हमारे पास ए बी नोन है, सो दिस इज नोन टू अस। एंगल ए भी नोन है, सो दिस इज ऑल्सो नोन टू अस। अगर इन दोनों को हम इस इक्वेशन में डालेंगे एंड इफ वी टेक ए साइन इनवर्स इन आवर कैलकुलेटर, हमारे पास एंगल सी आ जाएगा। सो वी आर एबल टू फाइंड एंगल सी बाय अप्लाइंग द नेपियर्स रूल्स। नाउ इज इट क्लियर बेटा? यस। ओके यस। ओके, सो और कोई पार्ट ढूंढना चाहते हो बेटा? और क्लियर, इट इज क्लियर नाउ? क्लियर है सर। Okay, very good beta. So this is Napier's rule. Now once we know the cosine formula and the Napier rule, now we are ready to go into great circle sailing problems. तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि जो ये ग्रेट सर्कल की प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक ग्रेट सर्कल की जो एक प्रॉब्लम आती है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया होता है एंड क्या इंफॉर्मेशन हमें निकालना होता है। सो आई विल ब्रीफली टेल यू अबाउट दिस, देन वी विल सी कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये दो चीजें ही यूज होती हैं। मैक्सिमम जो यूज होता है वो है कोसाइन फॉर्मूला एंड समटाइम्स इन स्पेशल केसेस द नेपियर रूल इज आल्सो यूज्ड। सो लेट मी टेल यू कि ये जो ग्रेट सर्कल की प्रॉब्लम हमें मिलती है इसमें हमें क्या क्या गिवन रहता है और क्या चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है। लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड वंस अगेन। Let's erase this. ओके, अब बेटा ग्रेट सर्कल के एक सिंपल क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन में दे विल गिव अस टू पोजीशंस। सो एक हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी जिसको हम यूजुअली ए कंसिडर करते हैं, और एक हमारी डेस्टिनेशन पोजीशन होगी जहां पे हमें पहुंचना है जिसको हम बी कंसिडर करते हैं। इन दोनों पोजीशंस का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड इज गिवन टू अस। So position A, starting position, latitude and longitude. Position B,
which is our destination where we want to reach, उसका भी latitude and longitude हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है. This is what is given. Now what they want us to find is, they want us to find what is the great circle distance between these two points. ये पहली चीज है जो हमें पता करनी होती है, what is the great circle distance in nautical miles. और दूसरी चीज जो हमें पता करनी है वो है बेटा हमारा इनिशियल कोर्स और हमारा फाइनल कोर्स. सो आई विल राइट इट एज एफ को. सो ये तीनों चीजें हमें पता करनी होती हैं. अब पहला डाउट जो माइंड में आता है, नाउ व्हेन वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यूजुअली तो हमारा कोर्स जो है वो सेम रहता है, वो तो चेंज नहीं करता है. प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग में अगर हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं, यू गो ऑन ए स्ट्रेट लाइन ट्रैक. जिस कोर्स पे आप चलना शुरू करते हो, अपने डेस्टिनेशन पहुंचने तक आपका कोर्स तो सेम रहता है. सो व्हाई इज द कोर्स डिफरेंट हियर? कैन एनीबडी टेल मी बेटा, डज एनीबडी नो कि ये कोर्स चेंज क्यों हो गया है, इनिशियल और फाइनल अलग अलग क्यों हैं? Sir, because we are Because sailing on the surface of the earth and which is curved, so that's why. Okay, you are close. Okay, ये कोर्सेज बेटा डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि जब आप एक ग्रेट सर्कल ट्रैक पे चलते हो, द ग्रेट सर्कल ट्रैक डज नॉट अपीयर एज ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए मर्केटर चार्ट. ग्रेट सर्कल ट्रैक को जब आप मर्केटर चार्ट पे ड्रॉ करोगे, इट विल अपीयर एज ए कर्व ट्रैक. जैसा ये ट्रैक मैंने अभी नीचे बनाया है, दिस इज हाउ द ग्रेट सर्कल ट्रैक अपीयर्स ऑन द मर्केटर चार्ट. नाउ जब हमारा शिप एक कर्व ट्रैक पे चलेगा तो आप देखोगे व्हेन वी स्टार्ट ऑफ तो हमारा कोर्स कुछ और होगा. एज वी कीप ऑन मूविंग ऑन द ट्रैक, हमारा कोर्स जो है वो चेंज होता रहेगा, और जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे हमारा कोर्स कुछ और होगा. सो आवर कोर्स कीप्स ऑन चेंजिंग व्हेन वी मूव ऑन द ग्रेट सर्कल ट्रैक. Why it keeps on changing? Because the great circle track appears as a curved track on the Mercator chart. अगर आप मर्केटर चार्ट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, जिसको हम रम्ब लाइन भी बोलते हैं, ए रम्ब लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन ऑन द मर्केटर चार्ट, उस पे अगर आप प्रोसीड करोगे तो आपका कोर्स चेंज नहीं होगा, आपका कोर्स सेम रहेगा. बट अगर आप एक ग्रेट सर्कल ट्रैक को मर्केटर चार्ट पे प्लॉट करोगे, इट विल अपीयर एज ए कर्व्ड ट्रैक एंड हमारा कोर्स कंटिन्यूसली ट्रैक पे चलते हुए चेंज होता रहेगा. दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड अस इनिशियल कोर्स एज वेल एज द फाइनल कोर्स. सो ये हमने ढूंढना है एक ग्रेट सर्कल की प्रॉब्लम में. Now let me briefly make a small diagram here which will help us to calculate the great circle distance and courses. ये बेटा मैंने अर्थ की एक डायग्राम बना दी. इसमें इक्वेटर को ड्रॉ करते हैं. लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द इक्वेटर. You can mark it with EQ. So let's mark this point as Q. This EQ is the equator. Now यहाँ पे होगा हमारा पोल. This is the North Pole. अगर हम साउथ पोल बनाना चाहें, the South Pole would be here. This is where the South Pole would be. Now let's assume कि हमारी जो इनिशियल पोजीशन है, that initial position is here. This is point A. ये मैंने पॉइंट A बेटा यहाँ पे मार्क कर दिया. मान लेते हैं कि ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, and let's assume that this point here is point B, which is our final course. Okay. अब हम A से B के बीच में ग्रेट सर्कल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं. So let's join A and B on a great circle track.
जब भी बेटा हम ग्रेट सर्कल ट्रैक बनाते हैं तो उस ग्रेट सर्कल ट्रैक को सीधा नहीं बनाते, वी विल नॉट ज्वाइन इट विद ए स्केल, हम इसे कर्व बनाते हैं। सो इसलिए मैंने इसको कर्व बना दिया। ये कर्व हम क्यों बना रहे हैं? सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम एक 3D डायग्राम को, ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली तो एक स्फीयर की डायग्राम है, हम एक 3D डायग्राम को एक प्लेन सरफेस पे बना रहे हैं, प्लेन सरफेस पे बना रहे हैं। सो इसलिए इसका कर्व यहाँ पे दिखाते हैं टू इंडिकेट दैट दिस इज ए 3D कर्व्ड सरफेस। सो हमने ये A to B ग्रेट सर्कल ट्रैक यहाँ पे बना दिया। सो लेट्स मार्क इट हियर। व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्रेट सर्कल ट्रैक। ग्रेट सर्कल ट्रैक क्यों बनाया हमने? दैट्स व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। ओके, अब बेटा मैं क्या करता हूं? व्हाट आई डू इज I join the North Pole with my initial position and I extend this to join the South Pole. बेटा अब ये जो ग्रीन कलर का मैंने लाइन ड्रॉ की है, which is going from North Pole, passing from A and going up to the South Pole, can anyone tell me कि ये लाइन क्या है बेटा? ऑब्जर्वर मेरिडियन सर। Very good. This is the meridian or longitude of point A. इसी तरह से अगर मैं, लेट्स चेंज द कलर, नॉर्थ पोल से बी पॉइंट पे पास करती हुई एक लाइन गोइंग अप टू द साउथ पोल ड्रॉ कर देता हूं। सो व्हाट इज दिस बेटा? व्हाट इज दिस मैरून कलर लाइन नाउ? Meridian of point P. वेरी गुड, दिस इज द मेरिडियन ऑफ पॉइंट बी, आवर डेस्टिनेशन पोर्ट। ये उसका मेरिडियन आ गया। अब बेटा एक चीज आप मुझे और बताओ, लेट मी पिक इट अप इन येलो कलर। मुझे पता है ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये ए पॉइंट का मेरिडियन है। नाउ इफ आई मेजर दिस मेरिडियन फ्रॉम ए अप टू द इक्वेटर, जो ये येलो कलर की मार्क आर्क मैंने ड्रॉ की है, ये क्या है? दिस इज द आर्क ऑफ द मेरिडियन कंटेन्ड बिटवीन पोजीशन ए एंड द इक्वेटर। तो बेटा आप बता सकते हो कि ये क्या चीज होगी? सर लैटिट्यूड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दिस इज द लैटिट्यूड ऑफ ए। ये लैटिट्यूड की डेफिनेशन होती है, latitude of a place is the arc of the meridian contained between the equator and that particular place. So this yellow color line is the latitude of A. Similarly, अगर मैं इस तरफ भी ये arc बना दूं, this will be the latitude of B. Okay. अब बेटा एक बात और बताओ आप मुझे, पोल से इक्वेटर तक अगर हम जाएं ऑन द मेरिडियन, पोल से इक्वेटर तक अगर हम चले जाएं तो पोल टू इक्वेटर टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 90. Very good. It will be 90 degrees. So pole to equator is 90. This yellow color arc is the latitude of A. Can you tell me what will be this beta? Let me mark it in light blue color. अब बेटा पोल से लेके यहां तक आप बता सकते हो ये क्या होगा? 90 minus latitude. 90 minus latitude. Very good. It will be 90 minus latitude of A. So ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 90 माइनस लैटिट्यूड ऑफ ए। इसको हम लोग कोलैड भी बोलते हैं बेटा। आपको अगर याद हो ज्योमेट्री जो हमने स्कूल में पढ़ी थी उसमें 90 माइनस एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या को एंगल भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कोलैट ऑफ ए। अब अगर बेटा ये 90 माइनस लैट ऑफ ए है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी पी टू बी? 90 minus lat B. वेरी गुड, 90 माइनस लैट ऑफ बी। ये भी हमें पता चल गया कि ये 90 माइनस लैट ऑफ बी है। अब बेटा लास्ट थिंग बिफोर वी गो इनटू द ब्रेक, अब मैं इस ट्रायंगल में जो ये पी ए बी ट्रायंगल बन गई है, इस ट्रायंगल में मैं ये पी एंगल को यहां मार्क कर रहा हूं। अब ये पी एंगल क्या है? लेट मी डिफाइन इट। दिस इज द एंगल एट द पोल contained between meridian of A and the meridian of B. अब बता सकते हो बेटा ये किस चीज की डेफिनेशन है? सर डी लॉन्ग।
Very good, beta. This is the definition of D long. You are perfectly right. So ये जो एंगल है, जो एंगल P हमने डार्क ग्रीन कलर में मार्क किया है, this is the D long. D long between A and B. Okay. So इतना बेटा समझ में आ गया सबको? Yes. कोई भी डाउट अगर आपको इसमें आ रहा है, you can ask me. Okay, so up to here is clear, huh? ओके, वेरी गुड। बस बेटा अगर आप इतना समझ गए हो, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गई है, देन बेसिकली हमारी ग्रेट सर्कल सेलिंग 80% डन है, सिर्फ 20% ही बची है अब। सो नाउ लेट्स टेक ए ब्रेक, रिफ्रेश योरसेल्फ अप एंड वी मीट बैक एट 45. Okay, thank you, sir. Okay, beta. Okay, see you at 45. Thank you. Thank you, sir.